Hello children, how are you all of you? In last lecture we studied the state of matter. Okay, that is the solid, liquid and gas. Okay, now in this lecture we will try to understand whatever our subtopic is there. What is that? It is, can matter change its state? क्या मैटर अपना स्टेट फॉर्म बदल सकते हैं? मीन्स a solid can convert it into a liquid or liquid can convert it into gas. Okay, means they can move from one stage to another. Is it possible or not? Let's try to find the answers of all these questions in this session. Okay, so first thing is that children, suppose matter are changing their state, means they are going from solid to liquid. So at that time what is exactly happened? So what happened inside the matter during the change of state? When state has changed, what exactly happened inside the matter? We have to think about that. उसके बारे में अपने को सोचना है. Second, what happened the particles of matter, the particles inside the matter, what changes they face during this situation? And third, that is the most important thing, that is how does change take place? ये बदलाव कैसे आता है? Is it clear? These three things are there in which we have to think in this session. So first thing is that what happened inside. Okay, so here I have written that on increasing the temperature, when temperature is increased means when heat is given to any material. Okay, so what happened? On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increase. Okay, the energy it is stored inside in that energy, okay, that is converted into kinetic energy, and kinetic energy has increased, and due to increasing that kinetic energy, particles start vibrating with great speed. Okay, and due to that, intermolecular attraction of particle become weak. Okay, these three things has happened. First thing, whenever you provide the heat to any material, doesn't matter whether it is solid, whether it is liquid, whether it is gas, whatever is there, first thing is there, you know, the potential and kinetic energy. So inside where there is no work, energy is stored as it is, that is the potential energy. When heat is started to given, at that time that potential energy is converted into kinetic energy, and due to that kinetic energy its particles start vibrating, and due to that vibration, okay, their intramolecular force become weak, and due to that they started to change their state from one to another. एक में से दूसरे में जो है जाना शुरू करते हैं. हम ऐसा मान के चलते हैं सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस. लाइक दैट वे दे चेंज देयर स्टेट. इज इट क्लियर? नाउ वन क्वेश्चन इज देयर. लेट्स टेक वन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल. चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ वाटर. यू नो ऑल द थ्री स्टेट ऑफ वाटर. वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म, water is in liquid form, and water is in gaseous form. In solid form it is ice, liquid form you know that very well, water, and gaseous form it is a vapor. Is it clear? So just take this one example and then let's talk about further. फिर हम लोग बात करेंगे and try to understand this entire concept. इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. अब मेरे पास यहाँ पे कोई लैब तो है नहीं मैं आपको शो कर सकूं, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हियर
And you can do one thing, okay, you search in YouTube, because it is also not possible for you to do this kind of experiment at your home, because so many apparatus we need. हाँ, अगर मैं स्कूल में होता था तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे कुछ लैब में आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके डेफिनेटली बताता था, बट इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू सर्च this type of thing in your YouTube, definitely you will get something better there. Is it clear? So let's talk. आगे बात करते हैं. So what you do, take one beaker, एक beaker लो and keep ice inside it and put on thermometer. Okay, thermometer अंदर रखिए and after that start the heat that ice. उस आइस को हीट करना शुरू कीजिए, गर्म करना शुरू कीजिए. एंड एट दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द मेजरमेंट ऑफ थर्मामीटर इट इज शोइंग द 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. आप बोलोगे सर आप ये दो बातें बता रहे हो, बिकॉज थर्मामीटर में जो है, ये थर्मामीटर जो है बच्चे दो टाइप के होते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस का होता है या फ़ारेनहाइट का होता है. ओके, फ़ारेनहाइट मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में उधर ये लोग मेजर करते हैं, और इंडिया साइड में हम लोग यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं. बट टू कन्वीनियंट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की तारीख में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है दैट इज इन केल्विन. So 0 degree Celsius equal to approximate 273 Kelvin, because something there behind the decimal, but standard form we take 273. Is it clear? So 0 degree Celsius वो बता रहा है. Okay. Now you see ice is slowly starting to melt. Ice धीरे 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 पिघल रही है, and you observe the thermometer. You will see that entire ice has melted. Even though the temperature in thermometer is again showing the same, that is the 0 degree. नहीं तो होना तो ऐसा चाहिए कि भाई इतनी सारी जो है क्या कहते हैं हीट अगर गई है तो थर्मामीटर को भी तो कुछ ऊपर नीचे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए. लेकिन थर्मामीटर कांस्टेंट 0 डिग्री पर है जब तक कि कंप्लीट आइस मेल्ट होती नहीं है. तो वो हीट गई कहां? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. वी हैव टू थिंक अबाउट दिस. इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा. हम सोचेंगे. आई विल टेल यू दिस. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट व्हेन एंटायर ice has melt and convert into liquid means water, then again the temperature of thermometer rise 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, and like that way it reaches up to 100 degree. But after again 100 degree when it is reach, immediately water is not start to boiling. It take little time. So why this has happened? ये दोनों सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी है. फर्स्ट सिचुएशन आइस 0 डिग्री सेल्सियस में था जब तक पूरा मेल्ट नहीं हुआ, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस में रहा और लिक्विड कन्वर्ट हुआ. उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी इमीडिएटली बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई, कुछ देर रुकने के बाद में बॉइलिंग हुई. तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट हैपन? ऐसा क्या हुआ? बराबर है. नाउ लिसन केयरफुली. Whatever heat has provided to melt that ice into liquid, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हम लोगों ने दी, उस हीट ने क्या किया? ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिए हैं, उसने काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में वो हीट लग गई. एंड ड्यू टू दैट उस हीट का असर हमको थर्मामीटर में दिखाई दिया नहीं. पार्टिकल को ग्रेट स्पीड में वाइब्रेट होने में उस हीट ने मदद की एंड ड्यू टू दैट एनर्जी यहां खपने की वजह से उसका असर जो है हमको थर्मामीटर पर दिखा नहीं. इंट्रामोलिकुलर फोर्स को वीक बनाने के लिए
उसने जो है वहां पर मदद की। तो ऐसी जो हीट जो इस काम में आती है, बराबर है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन पॉइंट। एंड दैट इज लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, बराबर है, वो प्रकट नहीं होता है, इट हैज नॉट शोन बट इट एक्ट, वर्क करता है। ओके, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सम पार्ट्स आर देयर विच आई एम रीडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट, जस्ट सी। तो देखो, अंडरस्टैंड करो जरा। The amount of heat energy that required to change 1 kg of solid, you can say the ice, into liquid at atmospheric pressure, it is the melting point, is known as latent heat of fusion। तो वो मिलने वाली जो गर्मी है जिसने 1 kg सॉलिड को नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट किया, और वो हीट जो है वो थर्मामीटर में मेजर नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम लोग जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एंड दैट इज अगेन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, and the concept of Kelvin I already explained you, मैंने आप लोगों को समझाया। and with that what happened, that already I explained you, again I am telling here, it is written in atmospheric pressure when solid melt and convert liquid is called its melting point। okay, so in that melting point, and then again giving further heat, it convert into boiling point। Is it clear? So what happened exactly when heat is given to solid? When heat is given to solid, okay, it convert into liquid, and when heat is given to liquid, it convert into gaseous state। Is it clear? Now oppose of that, if you take cool means you take heat away, heat अगर आप वापस ले लोगे, यानी किसी भी चीज को ठंडा करोगे, तो गैसियस चीज को अगर आप ठंडा करोगे, so it will convert into liquid। वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वापस से उसमें छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना। Is it clear? So liquid, and again when you cool the liquid, ओके, इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। अब वो पानी को वापस से आप ठंडा करते हो तो वो वापस से आइस क्यूब में बदल जाता है। ओके, मींस द एंटायर फेनोमेना टू स्टेट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपको मैटर का स्टेट चेंज करना है तो हीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी आप अगर किसी चीज को गर्मी देते हो, ओके, देन इट चेंज इट स्टेट, तो वो उसका अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो हमेशा क्या ऐसा ही होता है क्या कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है? नहीं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग और वीक द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ द मैटर। मैटर के इंट्रामोलिकुलर फोर्स कितने वीक या स्ट्रॉन्ग है। ओके, इट्स डिपेंड ऑन दैट। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। आप लोगों ने घर में जो है जब पूजा वगैरह करते हो, सो एट दैट टाइम यू यूज द कैम्फर, कपूर, एंड यू कपूर को आप जलाते हो, and when you do the worship at that time what happen, just observe। अगर अभी तक नहीं किया तो अब ऑब्जर्व करना। हम लोग what we studied, solid give heat liquid and liquid give heat gaseous, but there you will observe camphor is in solid form, but when you give it heat it is directly converted into gaseous state, it does not go in liquid form। वो liquid form में जाता ही नहीं है। why? because उसके पार्टिकल्स के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो इतने वीक हैं, वो उसको लिक्विड में जाने नहीं देते, डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू गैस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
उस प्रॉपर्टी को सब्लिमेशन बोलते हैं. इन हिंदी एंड गुजराती दैट इज कॉल्ड द ऊर्ध्वपातन. ओके, वेयर एनी मटेरियल directly from solid to gaseous state does not reach in the liquid state. That situation, that phenomena is called the sublimation. No question is right. Only and only temperature is one factor, heat is only factor, or are other factors are also there जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं. Is it possible? Yes. So one more phenomena is there, and that is the pressure. When you pressure on the object, it can change its state. वो उसका state बदलता है. That I am going to show you with the help of this figure. Just see it. Now children, you can see here, when pressure is given to the object, so what has exactly happened? I have drawn one figure. See, this is liquid, this is solid, this is gas. Now two things is there. When any matter directly convert from solid to gas, that process is sublimation, that you know very well. And gas to liquid, that is called the condensed state. And similarly, liquid to solid, when it is converted, that is called the solidification. And similarly, when pressure is given and solid is converted into liquid, that is the fusion. And liquid is converted into gas, that is the vaporization. And gas is converted into solids, that is the deposition. So how it has worked? कैसे ये काम करता है? Let's talk. And this is the last one. See, it is mentioned here, applying the pressure and reducing temperature can liquefy gas. Have you heard of solid carbon dioxide? That you know CO2. Normally what we know, CO2 is in the gaseous state. But when high pressure is accompanied on it, the solid CO2 is converted directly into gaseous state. On decrease of pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state. And this reason, the solid carbon dioxide that we call the dry ice, सूखा बर्फ. It is not used for in eating purpose, fooding के लिए use नहीं करते, but to make the things cool, we use this kind of dry ice. So dry ice is the solid form of carbon dioxide, and it is the phenomena of pressure. Is it clear? So like this way, I have completed this topic here, and next and last topic, that is the vaporization. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और बहुत से natural phenomena which we see in our daily life. That we will try to understand, and this chapter will be over in next topic. Bye.